Submodule Lecture 3. Today's first result. Let R be a ring with unity and M and B R module. Let mapping homomorphic mapping module homomorphic mapping from M to N. Let K be a R submodule of M, then show that image of K is a submodule of N. ये हमारा क्वेश्चन है. Since additive identity of module M must belongs to K. Why? Because K is a submodule of M, so additive identity of M should be part of K. By image of this additive identity is again additive identity, but additive identity of N. So this additive identity of N belongs to image set of K. Hence, this image set of K is non-empty. Let X and Y belongs to image set of K. Then there exists alpha and beta belongs to K such that X is image of alpha and Y is image of beta. So X minus Y can be written as image of alpha minus image of beta. तो यहाँ होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगा देंगे. तो X minus Y is image of alpha minus beta. It means the image of alpha minus beta belongs to image of K. This implies that X minus Y belongs to image of K. Next, let R belongs to ring and X belongs to image of K set. Image of K. Then there exists alpha belongs to K such that X is equal to image of alpha. So image of R alpha is equal to R image of alpha is equal to Rx that belongs to image of K. This implies that Rx is image of K. Hence, image of K is a R submodule of N. और यही हमारा इस क्वेश्चन का एम था. नाउ थ्योरम नंबर 2. Let R be a ring with unity and M and N are be R module. Mapping from pi is a mapping from M to N be a module homomorphism. Let K be a R submodule of N, then show that inverse image of K is a submodule of N. ये हमारा क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन को डिटेल से स्टडी करते हैं. Since
image of additive identity of M goes to additive identity of N, and this additive identity of N belongs to K. So inverse image of additive identity of N is additive identity of M. So inverse image of additive identity of N, ठीक है, क्या होगी, या हम ये कह सकते हैं यहां से what this says that inverse image of K must contain additive identity of M. So inverse image of K का जो सेट है वो नॉन एम्प्टी है. नेक्स्ट, X and Y belongs to the set of inverse image of K. This implies image of X and image of Y belongs to K. So their difference must belong to K because K is a submodule. It can be written as like that. This means that X minus Y belongs to inverse image of K. Now last point for this theorem, let R be a element from ring and X belongs to inverse image of K. So image of X belongs to K. Now image of Rx is R time image of X. होमोमॉर्फिज्म, मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगा दी. K ये एलिमेंट किसका है, K का, और K यहाँ पर क्या है, सब मॉड्यूल. तो रिंग के एलिमेंट के साथ दूसरा गुना होने पर K में ही आएगा. This implies that कि Rx belongs to inverse image of K. So we get inverse image of K is a submodule of M. Now we discuss another module named as quotient module. ठीक है. M is a R module और N is a R submodule. क्वेश्चन मॉड्यूल बनाने के लिए ये जरूरी चीज है. Then M by N is defined. How is defined? M by N यानी कि क्वेश्चन मॉड्यूल, उसमें सारे के सारे जैसे लेफ्ट कोसेट टाइप एलिमेंट होंगे, दिस वेयर X बिलोंग्स टू M. ओके. अब यदि हम इसको दोबारा से मॉड्यूल कह रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो एडिशन की प्रॉपर्टी डिफाइन करके दिखानी है. वो ऐसी होगी XN प्लस YN इज इक्वल टू X प्लस YN. दूसरी स्केल, हाँ, ये तो होगी इंटरनल बाइंड एक्सटर्नल RXN इज इक्वल टू RX प्लस N. तो यहां पर X प्लस N और Y प्लस N तो M बाई N में है, और R कहां से है, रिंग से. ओके. तो अब हम एक दो बातें यहां पर करना चाहते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं. इफ X बाई N इक्वल टू Y बाई N, what this implies? X minus Y belongs to N. Okay, X minus Y belongs to N. Next, R belongs to ring. This implies that Rx minus Y belongs to N. So Rx minus Ry belongs to N. It implies that Rx plus N is equal to Ry plus N. Rxn is equal to Ry. Okay.
यस, ये क्या हमें दिखा रहा है, बहुत ही सिंपल सी बात दिखा रहा है कि यदि ये दो सेम थे, इसको r से गुणा करेंगे तो ही सेम आएगा। वन मोर थिंग, आप फिर बता रहा हूं, देखो हमारा मेन टारगेट यहां पर क्या चीज चल रहा है कि इसे मॉड्यूल प्रूव करना है, ठीक है। मॉड्यूल, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। अब हम ये ले लेते हैं, मान लिया x प्लस एन y प्लस एन। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली आप ये भी प्रूव कर सकते हो, सिमिलरली आप ये भी प्रूव कर सकते हो आर एस एक्स प्लस एन आर एस एक्स प्लस, ये सारी प्रॉपर्टी प्रूव हो सकती है। इन सारी प्रॉपर्टी के प्रूव करने के पीछे मकसद एक ही है, वो क्या है, एक और प्रॉपर्टी आएगी 1 इंटू एक्स प्लस एन को आप क्या, मेन टारगेट है इसको क्या प्रूव करना था आपको, मॉड्यूल। फर्स्टली तो आप इसको प्रूव करोगे ग्रुप अंडर एडिशन, फिर ये आपने एक्सटर्नल प्रोडक्ट को वेल डिफाइन दिखा दिया, फिर आप पहली प्रॉपर्टी, दूसरी, तीसरी और चौथी सारी प्रॉपर्टी प्रूव होने के बाद इसका मतलब यू हैव टू शो दैट कि m बाई एन इज ए आर मॉड्यूल। करेक्ट, क्या प्रूव कर दिया हमने, m बाई एन इज ए आर मॉड्यूल। डाउट नहीं होना चाहिए किसी क्वेश्चन में। इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क। अब एक क्वेश्चन देखिए, m इज ए आर मॉड्यूल, हम इसको एम आर लिखते हैं, n इज ए आर सब मॉड्यूल। एक प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी और तीसरी प्रॉपर्टी, m इज ए आर मॉड्यूल, n इज ए आर सब मॉड्यूल, तो ये m इज सबसेट ऑफ n। नाउ कंसीडर मैपिंग T फ्रॉम m टू क्वोशिएंट मॉड्यूल m by n. It is defined like that Tm is equal to m plus n, where all n belongs to n. So firstly we have to show that T is nothing other than is a module homomorphism. Second, we have to show that this is onto, and third, we have to show that the kernel of T is nothing other than n. We have to prove these three things. First, T of m1 m2, it will written as m1 plus m2 plus n, और यहां पर प्रॉपर्टी लगा दोगे तो आ जाएगा m1 plus n m2 plus n. This can be written as tm1 tm2. अभी भी होमोमॉर्फिज्म नहीं प्रूव हुआ है, एक प्रॉपर्टी बाकी है, वो क्या है, इफ R बिलोंग्स टू रिंग तो T ऑफ Rm इज इक्वल टू RTM, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे Rm प्लस n, दिस कैन बी रिटन एज दिस, एंड आवर थिंग इज प्रूव्ड। नेक्स्ट, ऑन टू, यहां से एक एलिमेंट ले लो, आपने एलिमेंट लिया m प्लस n, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया है, वेयर small n belongs to n, so Tm goes to this. So for each element this we get m such that वो इसमें ट्रांसफर होता है, और ये किसका एलिमेंट है, m का, तो we have proved on to. Now last, कर्नल।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्नल? एम कर्नल से लिया, दिस इंप्लाइज दैट Tm is equal to n. What is this? This is 0 of module m by n. This can be written as n plus n, m plus n equal to n, both sides. This implies that m belongs to n. This shows that n is equal to kernel of T. तो ये हमने तीनों बातें प्रूव कर दी. Before going to the proofs of fundamental theorems, we now give a definition, new definition. What is this? Cyclic modules. An R module M is called cyclic module if it is generated by a single element X for some X belongs to M. For example, हमने आपको बताया था कि ये एक साइक्लिक मॉड्यूल है. दिस इज जनरेटेड बाय ओनली X. ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक साइक्लिक मॉड्यूल है. दीज आर सेम, हमने प्रूव किया. थर्ड, every finite additive abelian group is cyclic Z module. And fourth, every field F as an F module is cyclic. अब क्वेश्चन ये है कि किसी मॉड्यूल को आप साइक्लिक मॉड्यूल कब कहोगे? ओके, ये हम कंडीशन आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे. पहले तो हम इसको में से पहले करेंगे फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, थर्ड फंडामेंटल थ्योरम, and then we go to this question. Thank you very much.